the national crush of the country. She's saying, I was waiting for you. I'm like all floored. You know, Rashmika, the last time you were here, the box office was shattered the next day. All the records were broken. What do you have to say, like, before we play the trailer of Goodbye for the first time? I've had a wonderful. Oh, sorry. Okay. Yes, sir. You got it. Yeah, matlab, I was just looking at him for some time. Oh, what a gorgeous face he has. But yeah, the last time I was here, I had such a blast, and it was my first time, the last time, that I had met you also, and such lovely everyone, actually. And this is my second time, and I hope it brings the same amount of love from the audience that it did get me the first time. And yeah, I'm excited, I'm nervous, I'm looking forward. I have such support here. My team is here, I'm so happy. Film debut, right? As in, Official debut. yes, like this is my first Hindi straight film. Of course, like with Pushpa, I sort of feel like, there's so much love pouring in and all of that, but this is going to be my first straight Hindi film, which I'm very, very excited for, and I get to work with all of them. It's madness. Yes, it is. So, would request you to kindly be seated. Thank And you. we'll take a look at the trailer. Thank you. I hope you guys like it. Will you like it? Are you looking forward to it? Are you excited for it? Like from backstage, I was hearing nothing. Give like one Arey, come on, make some noise. full What is noise. this? Full noise. 1, 2, 3. Are you excited for it? That's Love why, it. you're just amazing. That's why I love you. Thank you Thank so you. much. Thank you so That's much. Rashmika Mandanna, ladies and gentlemen, for you. And now, अक्सर हम यहाँ पे मिलते हैं, आप, हम सब. और मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रेलर देखिए, all eyes on the big screen. लेकिन यहाँ पे इसे देखना नहीं है. Goodbye के ट्रेलर को महसूस करना है. तो for the first time, ladies and gentlemen, presenting the most amazing trailer of Goodbye. All eyes on the big screen. थोड़ा हल्ला मचा लो यार, अच्छा लगे. बाजी यहाँ पर आ गए हैं. भाई थोड़ा सा लेट हो गया आप. मैं देख रहा था आपको, है ना? तो यहाँ पे जोरदार तालियां सुनील ग्रोवर के लिए, ladies and gentlemen. The superb actor that we saw अभी यहाँ पे, and इससे पहले भी उन्होंने अपना जलवा दिखाया है. Give it up for Pavel Gulati, ladies and gentlemen. Presenting the amazing cast and crew of the movie Goodbye, ladies and gentlemen. लेकिन इस Goodbye के साथ वेलकम कर रहे हैं हम लोग आपका. And exclusively for all you wonderful people, we'll have a quick photo op, है ना? उसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे दौड़ाएंगे. पवेल भाई आइए, सुनील सर. मैं तो स्टूपिड को किडनैप किया है. I have literally kidnapped her because stupid. It wasn't. You see, stupid right here, na. So when they got it on set, I remember that I was so in awe of her. So I was like, I'm going to take her home. I'm sorry. And Bachchan sir, I remember, he's like, no, she's coming to my house. And we sort of like had a this actual father-daughter wala argument. I think I had it with Mr. Bachchan there at that point of time, where I was like, no sir, I'm taking her home. And both of us did this the whole day. We were like, no, I'm going to take her home. So in the end, she's in my house. She's आपने in cool. सर की बात की है यहाँ पे, तो बता देता हूँ, सर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है. Ladies and gentlemen, give it up for Mr. Hi, sir. Amitabh Bachchan. On this screen, sir, welcome. And सबसे पहले एक ही चीज बोलना चाहूंगा. Every single time, I've got an opportunity to interact with you, be it on radio, television or wherever. मैंने कहा है और आज भी बिल्कुल बेझिझक होके कहूंगा, I love you, Amitabh Bachchan. I've always done that, and ये एक उनके फैन की तरफ से होता है. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपके लिए कुछ सवाल जवाब हैं, with your kind permission, sir. जी, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आ नहीं सका. हाल ही में मुझे दूसरी बार कोविड से मुक्ति मिली है और बहुत सारी पाबंदियां लग गई हैं,
डॉक्टरों की वजह से, इसलिए मैं वहाँ प्रस्तुत नहीं हूँ। लेकिन ये जो नए नए साधन बन गए हैं आजकल टेक्निक के, उसकी वजह से आज आपके सामने हूँ। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग यहाँ हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अभी थोड़ी देर में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर देने में मैं सक्षम हूँ। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं दी अमिताभ बच्चन साहब के लिए। सर तो मैं विथ योर काइंड परमिशन सर, आई विल डू दी ऑनर्स सर। लाइक मैं पूछ लेता हूँ वो सवाल जो यहाँ पे आए हैं आपके लिए। एंड सबसे पहला सवाल जो है पीटीआई से कोमल पंचमाटिया जी की तरफ से है, एंड दैट इज़ you've had झुंड एंड रनवे 34 जो इस साल रिलीज हुई सर। आने वाली फिल्में हैं ऑफ कोर्स गुड बाय, ब्रह्मास्त्र और ऊंचाई। तो सर बैक टू बैक थिएट्रिकल रिलीजेस हैं, ऑडियंस को इतना सारा कंटेंट मिलता है, इस सब के बावजूद सर कैसे कैसे उनका जो इंटरेस्ट है वो बना के रखते हैं सर अपनी फिल्मों में? ये कोई नई बात नहीं है। हमारे ज़माने में कई बार ऐसा होता था कि ये एक ही महीने में 4-4 फिल्में रिलीज होती थी। हर हफ्ते, हर फ्राइडे को एक नई फिल्म आती थी। साल भर में हम लोगों की 8-9 फिल्में रिलीज होती थी। तो ये कोई नई बात नहीं है जी। दूसरी बात ये है कि कोविड की वजह से और जो बीच में 2 साल लोगों में बहुत सारी पाबंदियाँ आ गई, लॉकडाउन हो गया, कुछ डिलेज हो गई, और उनकी वजह से जितनी रिलीजेस हैं वो एक साथ सब आ रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसे देखेंगे। देखिए, समय के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बदलती रहती हैं, और जब एक टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी को ओवरटेक करती है तो थोड़ा समय लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि समय के बाद, थोड़े ही समय के बाद, जिस तरह से हमारी फिल्में जो हैं थिएटर में देखी जा रही हैं, OTT में देखी जा रही हैं, वो भी देखने का इनको एक अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस जवाब के लिए। अगला सवाल है प्रियंका सिंह जी का जागरण से सर। उनका पूछना है कि वास्तविक जीवन में आप कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी से गुड बाय करना चाहेंगे, साथ ही पारिवारिक फिल्म करने में आपको किस तरह से संतुष्टि मिलती है सर? जिसे गुड बाय कहना चाहेंगे वो तो है कोविड। और रही बात संतुष्टि की, तो जितनी भी फिल्मों में हम काम करते हैं उसमें काम करने का अवसर मिल रहा है, यही एक बहुत बड़ी संतुष्टि है। हालांकि काम से कभी संतुष्टि नहीं मिलती, हमेशा एक ये बात बनी रहती कि पता नहीं काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो वो संतुष्टि जो है वो मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने भी कलाकार हैं सब इस बात से सहमत होंगे कि संतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे सीखने का फिर अवसर जो है वो बंद हो जाता है। और प्रतिदिन हमारे लिए एक सीखने का अवसर मिला। हमारे बगल में जितने भी अभी इस समय कलाकार खड़े हुए हैं, ये सब के सब बड़े ही दिग्गज कलाकार हैं, और प्रतिदिन इनसे कुछ सीखने को मिलता रहता है। जब भी मैंने इनके साथ काम किया, जितने दिन भी इनके साथ काम किया, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ मुझे सीखने को मिला। और ये सब के सब इतने होनहार कलाकार हैं। बहुत से लोगों के चेहरे शायद आप पहली दफ़े देख रहे होंगे, लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है उनको देख करके, उनके काम को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि अपनी पहली ही फिल्म में और कुछ ही सालों में वो इतना अच्छा काम करते हैं। हमको 50 साल लग गए, अभी भी हम सीख रहे हैं कि कैसे काम करना चाहिए, लेकिन ये लोग आ जाते हैं और पहली ही फिल्म में इतना अच्छा काम करते हैं, तो उनसे कुछ सीखने को मिलता है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर ह्यूमिलिटी कहूंगा मैं इसे बिल्कुल यहाँ पे, है ना। विकास सर, मैं आपके पास आता हूँ जल्दी से। व्हेन वी हैव सर हमारे साथ यहाँ पे, व्हाट डू यू हैव टू से, हाउ वाज इट डायरेक्टिंग दी अमिताभ बच्चन सर फॉर यू? मेरा तो हो गया, मैं इसके बाद गांव निकल रहा हूँ। आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग लेफ्ट टू डू आफ्टर दिस, Right. सो आई एम डन। सर मेरी होगी संतुष्टि, सर आप अपना देख लो। सर मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एकता, दिस वंस फॉर यू। प्लीज मुझे बताएं, यू नो एवरी सिंगल टाइम वी टॉक अबाउट कंटेंट और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा, you've aced it. यहाँ पे you know this stalwart starcast with Mr. Amitabh Bachchan. What do you have to say about Goodbye? We can't even talk about acing it when Mr. Bachchan is on the same stage. I mean, there is nobody I have ever wanted to work with except for one man, and that is Mr. Amitabh Bachchan. And finally, my dream has come true. I have a selfie as a child with him, a photo as a child with him, and I have a lifelong dream to click a selfie with him.
I will do it just now. Can somebody click this picture for me? No, that's a moment. Oh, thank you so much. And I think this is one of the scripts that has made me most happy, and to have to work with such a great cast, Mr. Bachchan, Vikas, I think I'm honored. What else to say? I don't think I can even talk about acing it with these people. Right. Thank you so much. Neena ma'am, this one's for you. You know, with that khatti meethi nok jhok that we saw on the big screen with Bachchan साहब. Please थोड़ा सा बताइए, ऐसे असली में तो कुछ नहीं हो गया ना? Like थोड़ा backstage. अगर हुआ भी हो तो मैं क्यों बताऊंगी? है भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है. Sorry ma'am. हाँ, हमारी पर्सनल बात पर्सनल है. अच्छा ठीक है. हाँ, जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो तो मैंने पहली बार देखा कुछ फिल्म का, मतलब ट्रेलर देखा, और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी तक क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा मुझे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ जो मैंने देखा, और जिस तरह से ट्रेलर बनाया, जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी उस, और जो हमने शूट की थी उसके बाद जो ट्रेलर बनाया, इट्स आई डोंट नो व्हाट टू से. मैं अभी भी ऐसे हूँ. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Sir, this one's for you one more time, sir. Miss Malini से श्रवण शाह ने पूछा है आपसे. You've always managed to strike a chord with the audience every single time, sir. When you featured on the 70mm का पर्दा, even after so many years, how do you manage to do it? And that too without making any of your performances look monotonous. You know, the credit of this has not got to go to me. It has to go to the producers, the writers, and the directors who actually conceive a concept of making a film. And to be able to get a job, to be able to work within this lovely triumvirate of the producer, director, and the writer, right, is something that is extremely fortunate for me. They conceive, they decide, they write what the film is going to be about, what this character is going to be about. We are just puppets. We just go there and do what the writer has written and what the director tells us to do. So, if they're getting monotonous, then ask them the question. Right. For me, it is an honor and a privilege, wow, that they are able to give something different to me, and that I have an opportunity to work in it. But the monotony doesn't come from any other aspect other than the fact that the writers, the directors, and the producers are the ones that are creating something different. And I'm just very fortunate to be a part of their creativity. Wow, sir. We are really fortunate यहाँ पे इस लॉन्च का हिस्सा बनकर. अगला सवाल सर इंडिया टीवी से जोयता मित्रा जी का है. Just 1 minute. कई बार होता है कि जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं एक संयोग बन जाता है. एकता जी जो हैं वो बचपन से हम इनको देखते आए, हमारे सामने ये बड़ी हुई हैं, और अब उनके बैनर के तले काम करना ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है. विकास जी को हमने इनकी फिल्में देखी, इनकी सराहना की, और ये केवल संयोग है कि आज हम उनके साथ काम कर रहे हैं और उनकी फिल्में आज उसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है. और ये संयोग जो है ये दिल से बन जाता है. हमने इनसे थोड़ी ना कहा था कि आज आप पीला पहन करके आइए, क्योंकि मैं भी पीला पहने हुआ हूं, और थोड़ी देर पहले इन्होंने काला चश्मा पहना हुआ था तो मैं भी काला चश्मा पहने हुआ हूं. एक दूसरे से हमने बात नहीं की थी. Right. इसे मैं कहता हूँ ये संयोग होता है. वो मुझे समझते हैं, मैं उन्हें समझता हूँ, और इसी तरह जो है एक बंधन जो है बन जाता है. Amazing. जी सर. सर मेरा अगला सवाल जोयता मित्रा जी की तरफ से इंडिया टीवी से. आप वो लिखती हैं, आपने अपने सोशल मीडिया पर गुड बाय का टीज़र शेयर करते हुए कहा था कि परिवार की कंपनी सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, और जब कोई पास में नहीं होता तो परिवार ही होता है. सर परिवार आपको खुश रखता है, तो ऐसे में उनका सवाल है कि परिवार के मुखिया के तौर पर मुखिया की क्या जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार को बांधे रखे, और गुड बाय में कौन सी ऐसी बात है जो हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देगी कि परिवार हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है. सर जब आप मुखिया शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है किसी गांव के मुखिया हो गए हैं. जोयता जी, नहीं, गांव के मुखिया नहीं है. किसी भी परिवार के जो मुखिया होते हैं
वो घर की महिला होती है, वो माँ होती है, वो पत्नी होती है, वो बहन होती है। हम लोग तो केवल काम करते हैं, लेकिन वो घर संभालती है, वो परिवार संभालती है, वो एक इतना अच्छा खूबसूरत घोंसला बनाती है जिसमें हम लोग रोज शाम को आकर के बैठ सकें, मिल सकें और आगे बढ़ सकें। प्रतिदिन जो भी फैसला होता है उनकी आज्ञा के बिना हो नहीं सकता। राइट। जब कभी भी हमारे सामने कोई ऐसी दुविधा आती है, we get a little confused as to, you know, which direction to take, where to go, what to do. You always think that if my father and mother were alive, what would they have done in such a situation? And suddenly you get all the answers. And that is what I feel is the role of the mother, of the wife in the family. In this family, in this film, it's the mother, it's the lady that is the mukhya, not me. And they are the ones that are guiding the events. Many a times there are tragedies that happen in a family. And I don't mind sharing a personal incident of mine. When I lost my father, after the last rites were over, बाबूजी के कमरे में मैं आकर के बैठा हुआ था और जाहिर है कि निराशा थी और हमारे मित्र थे वो भी आकर के बैठे हुए थे हमारे साथ। उन्होंने कहा तुम इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? मैंने कहा नहीं, अभी अंतिम संस्कार करके आए हैं, थोड़ी सी निराशा तो है ही। उसने एक बहुत अच्छी बात कही, उसने कहा कि आप निराश क्यों हो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आप 60 वर्ष से ज्यादा समय अपने पिता के साथ गुजार सके। मैं तो सिर्फ 25 साल गुजार सका। ये बताता है कि एक घर में जो बुजुर्ग होता है उसकी कितनी अहमियत होती है। वो सिर्फ 25 साल गुजार सके और ने कहा आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको अवसर मिला या आप 60 सालों से भी ज्यादा अपने पिता के साथ समय गुजार सके। ये छोटी छोटी बातें होती हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि यही बातें जो हैं विकास के मन में थी। क्या चाहता होगा उन्होंने, क्या चाहता हमारे माता पिता ने, किस तरह अपने जीवन को व्यतीत किया जाए, किस तरह वो जीवित रहें, किस तरह जब वो चले जाएं तो क्या हो। ये सारी बातें जो हैं, जब विकास पहली बार आए थे हमें इस कहानी की पटकथा सुनाने, तो वही चीज़ थी जो हमको आकर्षित करी और हम बधाई देते हैं उनको कि उन्होंने ऐसा सोचा। और अब ये मेरा सौभाग्य है कि हम इस फिल्म में काम कर रहे हैं। Thank you so much, sir. Thank you. Rashmika sir was just talking about बड़ों के साथ कि कैसे साथ के साथ सब आगे बढ़ते हैं. What do you have to say? You're working with Mr. Amitabh Bachchan, Neena Gupta ji, and of course this stalwart cast here. I think I'm extremely honored. I think I've had such a blast shooting in the film. Right. And of course, shooting with a legend and shooting with Neena ma'am, shooting with the whole team. It was like the moments of shooting together, the memories you carry from shooting together. It's something which is engraved in your heart. Yeah. It's something which will always live. Of course, every actor wants to, do a film with Bachchan sir. So when I heard the script and when I heard it was Bachchan sir and it was Vikas sir and the whole team, and I was like, there's absolutely no reason to, back out from this. This is once in a lifetime sort of a memory. Yeah. So I'm here today. We've just seen the trailer of the little joy that we have created, and we're all so overwhelmed, I think, today, and it's a beautiful feeling. And in a way, we felt the response that we got over here. Yeah. So is there anything that you'd like to tell Mr. Bachchan यहाँ पे अभी when he's here with us? Sir, I love you. Yes, Rashmika. It's been an absolute pleasure. I remember the letter that I got from you, and I still keep it with me, very close to me in my library. And thank you for being you, and thank you for letting me work with you. It's been super special. Please write a letter back to me so that I can also say anything. I'll do that, sir. I have to. I will. Thank you, Rashmika. Yeah, please. Little gift also I'll send you. Thank you, sir.
सर एक और सवाल है अभी मेरे पास आपके लिए, आखिरी 2 सवालों में से। पिंक विला से हिमेश मानकर ने पूछा है, सर, हैविंग बीन इन द इंडस्ट्री फॉर ओवर 50 years, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट गेट यू ऑन बोर्ड अ फिल्म एंड व्हाट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट दैट मेड यू से येस टू गुड बाय, सर? एक और नौकरी मिल गई और क्या। सर हमारी उम्र में क्या है, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है सर। और जहाँ कहीं भी नौकरी मिल जाती है वहाँ हम भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि नौकरी मिल गई काम करने के लिए। सर एक आखिरी सवाल है एनबीटी से संजय मिश्रा जी का, ऐसी कौन सी खास बातें थी इस फिल्म की कहानी में जिनकी वजह से आप इसका हिस्सा बने? सर इन्होंने इलैबोरेट कर दिया है क्वेश्चन को। अब ये तो जब आप फिल्म देखेंगे तो ही पता चलेगा। यहाँ पर अगर उसके बारे में हम थोड़ा सा बोलेंगे तो कहानी निकल जाएगी बाहर। लेकिन इससे पहले जो मैं कह रहा था, देखिए घर में परिवार जो है वो सबसे अहम होता है और परिवार के साथ समय बिताना और उनके साथ रहना, उनकी बातें सुनना, ये आदतें तो हैं, ये धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही हैं। हमारा समाज जो है वो बदलता चला जा रहा है। Our lives are changing. Everybody wants to be independent, but I feel that whole influence of my times, when every evening it was a kind of a diktat from the head of the family. दिन भर कुछ भी करो, रात को आकर के खाने के मेज पे पूरा परिवार बैठ करके साथ में खाना खाएगा और खाना खाने के बाद में कुछ बातें होती थी, बुजुर्ग जो है वो अपनी बातें सुनाते थे, हम बच्चों को बैठ करके वहाँ सुनते थे। That whole element of being together with family is what is very attractive about the story of this film. और सबसे पहले तो अभी इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा, तो नहीं जाने से पहले मैं केवल हमारी जो मीडिया के देवी और सज्जनों हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आपका काम जो है वो बड़ा ही मुश्किल काम होता है। मैं समझ सकता हूँ दिन भर आप लोग सुबह से निकलते हैं घर से और इसको कवर करो, उसको कवर करो, एडिटर ने कहा कि यहाँ जाओ, इसकी फ़ोटो लो, इसकी कहानी बनाओ, बड़ा मुश्किल काम होता है आपका और हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन आज रात को जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा, कृपया अपने घर जाइए और थोड़ा सा समय अपने परिवार के साथ बिताइए। क्या बात है, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, यहाँ पर आए, हमसे मुलाकात की। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। लेकिन जाते जाते मुझे यहाँ पे बड़ी डांट पड़ने वाली है अगर एक साथ में फोटो नहीं होगी, तो मैं चाहूँगा आप सब लोग थोड़ा सा स्क्रीन के करीब आ जाएं। आइए दिस वे। चलो फर्ज कर रहा हूँ सुनील, मेरा भी हो गया। दोबारा एक बार फिर लो, एक बार फिर छोड़ेंगे नहीं हम आप। सर जी, thank you so much. Thank you so much sir for being here. All right, thanks. जी, and now request all you wonderful people to kindly be seated. इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। बैठे साहब। जी, पहला सवाल अब मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं। यू गाइस कैन शूट योर क्वेश्चंस। सो किधर से आ रहा है वो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो यस मैम, डिड यू गेट माइक? विकास जी, अच्छा, वेलकम टू यू। मैं यहाँ भावना शर्मा। पहले तो मैं खड़े होकर आपका स्वागत करना चाहूँगी कि इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई, जो अभी भेड़ चाल है उसमें बिल्कुल नई, फ्रेश और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जी।
मेरा सवाल ये है कि आपने अभी तक जितनी फिल्में बनाई हैं सब डिफरेंट जॉनर में बनाई हैं, लेकिन ये जो फिल्म आपकी हर फिल्म में ज़िंदगी कहीं ना कहीं रहती है, चाहे वो चिल्लर पार्टी हो या क्वीन हो या और दूसरी फिल्में। लेकिन ये जो फिल्म है वो ज़िंदगी के बाद की फिल्म है, पर उसको हल्के फुल्के जो क्षण होते हैं और जो चीज़ें होती हैं उनमें समेटना कितना मुश्किल था? एक्चुअली मैं कल आपस में ही हम लोग भी बात कर रहे थे और मैं भी देख रहा था पिक्चर और सोच रहा था कि ये थॉट्स कब आए, यू नो, व्हेन डिड दीज थॉट्स कम कि ऐसा लाइफ होता है, ऐसा कोई चला जाता है, ऐसी फैमिली होनी चाहिए. सो एक्चुअली you can't really put a finger to when a thought comes to your head. But while writing it and while making this film, I was just feeling overwhelmed with the happiness of family. And family is not just mom, dad, sister, brother. Family is also friends, family is everything. And I was just getting happy while writing it. You know, and I was thinking anything and everything that we face together is happiness, and I could somehow find the happy side to everything, you know. Now whether it was Queen, where I felt the worst thing that can happen in your life is probably the best thing that God sent to you, you know, or in this one the moment that so you must have realized that the girl is told that your mother's no more there. But I don't think mother's ever leaving, you know. She's never going. And because of presence we feel at any point in time. I live in Bombay. My parents live in Delhi. But I think my mom and dad are just like here. You know, they're just sitting here. And I went through a moment which I would want to share, which was a very nervous moment for me. When we were writing, making the film, COVID was happening, and somehow we felt we were going to lose people. And I was just hoping to hell that my mom and dad see this film, you know. And yeah, they're going to see it now. So I'm glad. एकता जी, आपके राइट या हेयर अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर। तो ये सवाल एकता, रश्मिका जी एंड नीना मैम, आप तीनों के लिए है कि इस फिल्म में जैसे हमने देखा एक जनरेशन गैप है और जो आज की जनरेशन है उनके अपने लॉजिक हैं अपने पेरेंट्स के साथ। आपके मतलब जब आप लोग ग्रो हो रहे थे, टीनेज में थे, तो अपने पेरेंट्स के साथ इस किस्म का मतलब आर्गुमेंट या मतलब क्या होती थी चीज़ें? आई थिंक हमने सब ने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत आर्ग्यू किया है एंड हम सब ने अपने पेरेंट्स को बहुत चीज़ें बोली भी हैं, गुस्सा किया है, बट देयर इज ऑलवेज दैट टाइम व्हेन यू गेट स्कैर्ड. योर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड. आई डोंट नो, आई एम गेटिंग सो इमोशनल व्हाइल सीइंग दिस. I actually welled up when I saw the promo. I think it's an age. You start worrying for your parents, and I don't know why I'm doing this. I'm hating it, so I'll pass. I think when me in real with my parents, I'm this child who's always been in a hostel. So for me, arguing with my parents was never a thing. So I think it shows the closeness that you have with your parents. Of course, you fight only with people who you're extremely close to, and people who you're with constantly, and people who you love extremely. So I think I sort of like, when I had the moment of being with my parents and all of that, I had already matured. Like there was no like fights between us. Now I just understand what they're asking for and all of that. So I think it's a very individual thing, and I think this film is really going to. It's extremely special, because it's something which happens in every house. Everyone has a mother, everyone has a father, everyone has a sister, everyone has a brother. It's a family. So I think this film is something which is really going to touch the core hearts of people.
and no matter how many times I sort of like watched the trailer, I was still, you know, tearing up. So I think it's those moments, and it's special, this film. Rashmika, your left. मैंने बचपन में अपनी माँ से बहुत मार खाई, और उस वक़्त मुझे, जैसे विकास कह रहा था ना, वो यहाँ ही रहते हैं, और मसाबा को मैं बताती हूँ कि तुम तो बड़ी लकी हो कि मेरी मम्मी वाली मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी आधुनिक हो गई हूँ, पूरी तो नहीं हुई उसके हिसाब से। तो किस बात में मार खाती थी सबसे ज़्यादा? तब नया फैशन आया था, मतलब बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, कि बालों में तेल नहीं लगाना। तो मैं कहती थी कॉलेज जाऊँगी, स्कूल जाऊँगी, मैं तेल नहीं लगाऊँगी, पर हमारे यहाँ तो तब तो तेल लगा के जाते थे। तो सबसे ज़्यादा मार मैंने खाई है कि बालों में तेल नहीं लगा के जाऊँगी। सो जनरेशन गैप तो होता है, लेकिन वो यादें, और जैसा विकास ने कहा, अब ये जो बात मैंने अभी कही है, ये मुझे अभी ध्यान में आई है, पहले से मैंने नहीं सोचा था। तो ऐसी चीज़ें, कितनी चीज़ें याद आएंगी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, मैं उस दिन मसाबा को भी बोल रही थी कि आप कितने फेमस हो जाओ, कितने अमीर हो जाओ, कितना आपका नाम हो जाए, कितना आप काम के लिए आपकी प्रशंसा हो, लेकिन अगर आपको पारिवारिक सुख नहीं है तो वो सुख बहुत कम हो जाते हैं। मैं उसे कह रही थी कि जब मसाबा के पैदा होने से पहले जब मेरी आउटडोर शूटिंग होती थी, मैं बड़ी खुश होती थी, क्योंकि मेरे पास घर पे वापस आने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं घर पे वापस किसके लिए आऊँ अकेले। लेकिन जैसे ही मसाबा पैदा हुई, नाउ आई यूज्ड टू विश कि मेरी शूटिंग बाहर ना हो, मेरी शूटिंग बॉम्बे में ही हो, क्योंकि मुझे घर वापस आने के लिए मेरे पास कोई था। सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट अ फैमिली। कह दिया ना मैंने सब कुछ, ठीक है। हाय रश्मिका, योर लेफ्ट। राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। सबसे पहले तो पूरी टीम को ट्रेलर्स के बाद बहुत बहुत बधाई। बहुत खूबसूरत ट्रेलर देखा हमने। उम्मीद है फिल्म से भी काफ़ी उम्मीदें लोगों को है। आप इतनी प्यारी लग रही हैं कि आपको अगर गलती से कोई गुड बाय बोलना भी चाहे तो गुड बोल के बाय अंदर ही खा जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। तो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा अगर अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कुछ खामियाँ भी होती है। तो आपकी नज़र में फिल्म इंडस्ट्री में क्या ऐसी कोई खामियाँ जिसको हमेशा के लिए आप गुड बाय बोलना चाहेंगी? मतलब not just the industry, लेकिन I think if there's one thing in my life which I would say I would like to say goodbye to is, like Bachchan sir said, COVID, first thing. Yeah. But I think ताज़ा but I think just I would say the negativity around us, or the negativity around anyone. I think I'm a happy, positive person, so I wish the world was also like that. Hi, Rashmika over here. Mayur here from Beyond Bollywood. You were always a star down south, and post Pushpa, you became this national crush, national star. But Big usually, words, sir. but I'm sure the moment you find that such kind of national fame, and you're going to be flooded. I'm sure there would have been producers, writers queuing, outside your house to sign you. So I just wanted to know, how do you basically, pick a subject in for you to make your Hindi debut, because I'm sure you must have been flooded with plenty of offers. So how do you basically sway away from all that euphoria, which all that noise, and decide what is best project for you to be a Hindi debut? I think I've always picked the scripts as my gut feeling says. I just believe that what it's meant to be for me will happen to me. Like, I just feel like that's the universe way of saying it. So it's purely a gut feeling. But also, to top it off, when I heard such a script, of course, I'm in a point in my career where I'm going out there, testing my waters. I don't know what's right. I don't know what's wrong. I don't know what people are going to expect of me. I don't know what people are looking forward of me. But I feel like I just I'm an actor. I want to do good films. I want to have fun while I do it. It's not like for life I'm going to be, doing the same thing. One day I'm also going to die. So till when I'm
till when I am able to work this happily and make such memories, I'm willing to do so. And while making such memories, might as well make everyone smile, and might as well give good memories to everyone who's watching the film. And this is so special because of the things which you're already seeing, in the trailer. So it's going to be extremely special. Yeah. Okay. Thank you. हाय नीना जी, हाय एकता जी, इधर पे आपके लेफ्ट में, यहाँ मधु BBC हिंदी से। नीना जी आपके लेफ्ट में, आई थिंक राइट में, सॉरी राइट में, यहाँ पे इस तरफ जी। हाय गुड बाय का अगर बात करें तो ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दिल को छू ले रहा है। नीना जी आपसे ये सवाल है कि आप दोनों ही, अगर हम बात करें बच्चन साहब की तो उन्हें सदी का महानायक कहते हैं और आप भी बेहतरीन अदाकारा हैं, लेकिन आप दोनों को हम एक साथ 40 साल बाद, एक लंबे इंतज़ार के बाद देख रहे हैं। इसके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि 40 साल का लंबा इंतज़ार रहा है आप दोनों का एक साथ काम करने का। नहीं, मेरा तो इंतज़ार भी नहीं था क्योंकि मैं तो सपना भी नहीं लेती थी उनके साथ काम करूँगी, तो मेरे को कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मेरा तो अचानक ऊपर से झोली में कुछ गिरा और मैंने कहा ये सच है क्या, और बस वो सच हो गया। फिर उसके बाद एक और सच हो गया। तो मैं, क्योंकि जब मैं आई थी ना तो फिल्में सिर्फ होती थी, कोई OTT TV कुछ नहीं था, तो मैं छोटे छोटे कोई सर्वेंट का रोल कर लिया किसी पिक्चर में, मैंने कहा एक भिखारी कि गैंग का रोल कर लिया मैंने। उस टाइम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा मौका आएगा जब सर के साथ काम करने को मिलेगा, तो ये तो इंतज़ार था ही नहीं। लेकिन आपके फैंस के लिए बहुत लंबा इंतजार था क्योंकि आप दोनों ही काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं कि आप दोनों को एक साथ देखना हमारा एक सपना ही था। अब मेरे को आपसे पूछना है कैसा लगा हमें एक साथ देख के? बहुत ही अच्छा, अच्छा लगा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ फिल्म रिलीज़ हो और मैं देखूँ। एकता जी आपसे ये सवाल है कि आप भी पहली बार एक साथ हम देखेंगे आप, लेकिन चाइल्डहुड मेमोरी की बात करें तो बचपन से ही आप देखती आ रही हैं और कई बार मिली भी होंगी, तो कुछ यादें जो आप शेयर करना चाहेंगी उनके साथ? मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ I think everyone saw me get emotional actually. एक बचपन से मैंने एक ही इंसान के साथ काम करने का मेरा सपना था, वो अमित जी हैं, बिकॉज एज अ चाइल्ड माई फादर इज़ अवेयर दैट आई यूज टू गो फॉर चिल्ड्रंस बर्थडे पार्टीज टू अमित जी's house. Shweta and Abhishek were my friends, and Amit uncle used to always call up my father and say that she just sat and stared at me all evening. I don't think I have ever wanted to work with anyone. No Khans, nobody, except for Mr. Amitabh Bachchan. And finally, Vikas has made my dream come true. And so for me, and I think that experience ऐसी पिक्चर करने का या प्रोड्यूस करने का मौका बहुत एक अलग इमोशन होता है, यू नो। कहते हैं कि सबसे कठिन जन्मदिन वो होता है जिस दिन आपके जो जन्म आपको देते वो नहीं हो, और वो दिन बहुत लोगों की लाइफ में आता है। वो डर, वो फियर, वो दिन, आई डोंट नो हाउ पीपल लिव इट। So the film is very close to my heart because it is a film about family, and we are nothing without our families. Hi Rashmika, towards your left. I have never done this in my life. You guys have always seen this. I do not know what's happening to me, but it is just now I can't help it. I have met Rashmika for the first time. She must be thinking I'm a very emotional person. She has no clue. This is the first time, and I hope last time. Hi Rashmika, towards you. Himesh this side from Pinkwilla. Rashmika, how is it to work with the two big A's? You are working with Amit ji in Goodbye. You are working with Allu Arjun in Pushpa, which you start soon. So how is it working with two big A's? And can you tell us something about both of them? I'm living my dream. It's of course, I can only say that I'm living my dream because Allu Arjun sir, I start Pushpa 2 with. Like, I think we're starting in a couple of days or couple of days. But right now, having this trailer out in front of the audience with Mr. Bachchan, so
what can I say? First of all, did you like the trailer? What do you have to say about the trailer? It's a Tell us beautiful something. trailer. Of course, it's a beautiful trailer. It brings a smile despite being. Did it bring like a teary smile or just a smile? It's a teary, happy smile. Okay, good. So we've won. That's what we're looking at, you know, from the trailer. That's exactly the reaction that we had. We were like tearing up, but at the same time we're smiling through the whole trailer. So, yeah, yeah. And Ekta, you know, the film is releasing on 7th October. It's 4 days before Amit ji's birthday. What do you have to say about this coincidence? It's his 80th birthday, so. It is not a coincidence. This is the year Mr. Bachchan turns 80. Yeah. It's a big day. He's the Mahanayak of this country, and huge. I think it's a huge day because we are now waiting to celebrate him. It's also the year my dad turned 80. So I feel like I think it's got to do with the fact that it's our way of celebrating him. You know, I think Vikas came up with this idea, and I think it was great. Thank you. Hi, this side. Hello, this is Gayatri from Alpha World. My question is to Neena ma'am. Ma'am, you have given us so many gems with your wonderful work vita. Is there any one particular character which was hard to say goodbye to? I didn't understand the question. I mean, you mean to say in the movies or in real life? What? The movies that you were part of, which character was very hard to say goodbye to? मतलब मैं चाहती थी कि होता रहे. Yeah, which आगे stayed चलता with रहे. you. Which stayed with you. Every character I play, like Badai Ho, for example, like Saans, for example. A lot of characters. जैसे हम लोग जब थिएटर करते थे ना, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, तो थिएटर करते थे तो एक सेट बनाया जाता था. वो सेट बनाने में और उस सेट में हम 1 महीना, 1.5 महीना, कई बार 2 महीना रिहर्सल करते थे. उसके बाद शो होते थे. सो सबसे तकलीफ जब होती थी जब प्ले के बाद सेट टूटता था. हमारा दिल भी टूटता था. सो इसी तरह अब हम ऐसे ही भांड लोग हैं एक्टर कि हम एक काम करने जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे में चले जाते हैं, उसको भूलते नहीं, उसकी यादें साथ रहती है. पर ये हमारा काम ही ऐसा है, आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे की अच्छी यादें याद करते रहते हैं, सेट टूटते रहते हैं, नए सेट बनते रहते हैं. सुनील जी, रियलिटी शो में काफी सारे कॉमेडी शो में आपने बच्चन सर का काफी मिमिक्री किया है. सेट पे कोई ऐसा मोमेंट है जब सामने में आपने ये कैसा सवाल है यार? यही तो सवाल. अच्छा सवाल. अच्छा सवाल है ऑब्वियसली यार. हैं तो नहीं ना बच्चे साहब यहाँ पे? पता चला कि लगा हुआ कनेक्शन अभी तक. तो ऑलमोस्ट हर रोज़ आया है. पहली बात तो मैं यहाँ खड़ा हुआ था, सर स्क्रीन पे थे, तो मैं तब भी नर्वस हो रहा था. सब लोगों की चाहत है सर के साथ काम करना, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भी उस लाइन में हूँ. सर को देखना, मैंने पिक्चर की इसीलिए थी कि सर रोज़ सर को देखूँगा, जाके बात करूँगा, मज़ा आएगा. और अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरा धुक हो रहा है. तो ऑफ कोर्स बच्चन साहब को देख के ही 90% एक्टर्स बने हैं आज की टाइम में, और 10% है वो झूठ बोल रहे हैं. तो यार जब भी वो जाते थे मैं तुरंत शुरू हो जाता था. मेरे उतरे ही नहीं थे. मैं कैरेक्टर सिर्फ अपना तब करता था जब एक्शन बोलते थे विकास सर, अदरवाइज मैं उन्हीं की कॉपी कर रहा था. सामने पूरा दिन सिर्फ यही करते थे. पूरा दिन हम सब वेट कर रहे हैं, शॉट कब ले, ये लगे हुए हैं. ये जो पैर छूने का चल रहा है, ये सुबह 8:30 बजे आते थे, और सर और सुनील दोनों 1 घंटा यही चलता रहता था. हम सब वेट कर रहे हैं कि हम शॉट कब ले. Hi Rashmika, Kunal from E-Rhyme Straight here. First of all, congratulations for a wonderful trailer. I want to know from you, you have been working with 2 veterans with a very close relationship on screen, one as a father, one as a mother. How was the experience, honestly, working with 2 great actors while making your grand Bollywood debut? Honestly, I think Bachchan sir, I met him 2 years back on my birthday. I remember this because
I was like, oh my God, I'm working on my birthday and I'm meeting Amitabh sir on my birthday. So I remember this day very clearly where I just wanted to introduce myself to him. So I waited. Sir was shooting, of course, and I was waiting. I was just wanting to say hi to him. And I'm just standing like in one corner, I'm just standing like that, and Sir just walks in and he crosses and he goes. So I'm like, okay, not now. Let me go inside, try it again. Because I was out there flashing a big smile. I was like, hi, sir. And then he's like, okay, just walked. Because, of course, he's thinking about the scene, what to do in the scene and everything. And I walked in and I was like, sir, hello, Rashmika, nice to meet you. I'm going to be playing your daughter. Okay, and I was out. Because I was so nervous, and at the same time, I had to, it's a responsibility, right? You're going to be working with the actor. So it's good to just, get each other's energy on the first day and everything. And then throughout the shooting, I remember that Bachchan sir, like every time, like initially I thought he didn't like me because he was like so strict and he was just like sitting there and he was just, we always had this banter, daughter and the father, like we always be like, what are you saying? There's no sense and yever. But I remember that I think one day just randomly when I walked into the set and everyone was like, did you see your Twitter? And I'm like, no, what happened? And they're like, Bachchan sir just posted a picture saying Pushpa. And then I was like, wait, what? That happened? Okay, when did that happen? I didn't see. But I think our relationship just got closer and closer throughout the making of the film. And him as a person is a beautiful person. So I'm just happy that I got to see that side of the legend. And coming to Neena ma'am, I think the first day itself when I saw her, I just sort of like felt this happy wala vibe, like I just wanted to go and chill with her, and I was a personal photographer in the set. I have so many pictures of her from the set because I was like, Neena ma'am, see, look at the camera, smile. I'm a very good photographer. Now I'll start putting them all out, of course with her permission. But of course. But yeah, I think I just was so comfortable, and it was easy with Neena ma'am. It was just like both of us, and we were talking about everything under the sun. And yeah, I love you. So I also love you. मैं प्रेस वालों को बोलना चाहती हूँ, देखिए मैं बहुत easy हूँ, मैं difficult नहीं हूँ जैसा आप कई बार लिखते हैं, मैं बहुत easy हूँ. She's a sweetheart. I second that. Sir, we'll just take two last questions, right? Pavel sir, this side. Sir, you've come up with so many dynamic films over the years. Which genre or which type of film do you want to be a kind of a trademark? Do you want to capitalize on? That's a very difficult question to answer because मुझे ना जिस पिक्चर में काम करने में मज़ा है, I think वो बहुत satisfactory होती है. So it is about by the end of it, the director that you're working with, genre आते रहेंगे because you want to try out a lot of things. But especially this kind of film, जैसे हम Goodbye के लिए हैं, I am working with the people who genuinely mean family to me. So for me, this film is so special because मैं दिल्ली से आ गया था बॉम्बे जब मैं 18 साल का था. मेरी फैमिली वहाँ पर है. But अगर ये मेरी फैमिली यहाँ पर नहीं होती, जो मेरे दोस्त हैं, जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, चैताली है, विकास है, साहिल है, it would be very difficult for me. So this film was like a celebration of a lot of families. बहुत सारे सपने सच हो गए इस पिक्चर से. And so अगर I get to work on a set like this where I'm working with my friends and having fun and doing something that I love, I think वो best genre होता है. Arey, I have to say something about this. Yeah, the first day I came to the set, the first time all of us were meeting together, तो मतलब like everyone just knew everyone. And I was like, wait, how do you know? How is this? I was having like some 2,000 questions in my head. And it's not fair. Everyone knows each other. And I was like, Arey, what is this now? I've come too late into the party or what? But now I'm chilling with them. So they're my people also. Hi, Sunil. Towards your right, Ravi from ABP News. सुनील, गजनी में एक बहुत छोटा सा किरदार निभाने से लेकर विशाल भारद्वाज के साथ पटाखा में काम करना, फिर हाल ही में तांडव आई थी, सनफ्लावर में आपने वेब सीरीज़ में काम किया, अब इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं. मैं जानना चाहता हूँ कि कॉमेडी के
एक कॉमेडियन के तौर पर आपकी पहचान है टीवी पर, उस पहचान से अलग क्या ये एक आप एक शिद्दत से कोशिश आपकी तरफ से है कि आपको कॉमेडी के अलावा भी लोग जाने, आपकी एक्टिंग, आपकी जो एक्टिंग की आपका कैलिबर जो है उसके लिए जाने, ये कोशिश कितनी आप शिद्दत से कर रहे हैं? और क्या टाइप कास्ट हो जाना एक कॉमेडियन के तौर पर आपको बुरा लगता है कि सिर्फ मुझे लोग कॉमेडियन के तौर पर ही जानते हैं और जो आपका सीरियस साइड है एक्टिंग का उसे लोग कम पहचानते हैं? क्योंकि आपके काम को मैं फॉलो करता हूं, तो एज अ कॉमेडियन भी आप मुझे पसंद है और एज एन एक्टर भी, क्योंकि आप बहुत प्रोलिफिक एक्टर हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। कॉमेडी बहुत टफ काम है, बहुत टफ आर्ट है, और मैं ऑनेस्टली ऐसा फील करता हूँ कि मुझे कॉमेडी करनी आती नहीं है। मैं उसे और सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, और ऐसा मैं फील करता हूँ। मैं ह्यूमिलिटी के लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ। प्राइमरीली जब मैं थिएटर भी करता था, ड्रामा भी करता था, मास्टर्स किया मैंने थिएटर में, तब भी मेरे को सब सीरियस रोल ही मिलते थे और मुझे पता नहीं था कि कॉमेडी में मेरा शायद सुर लग जाएगा। जब लगा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ, मैं नकल करता था सब लोगों की और लोग हंसते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो कॉमेडी करके मुझे बेहद खुशी मिलती है, लेकिन कॉमेडी इतना टफ है कि हर वक्त आप कर नहीं सकते। तो आपको डिटॉक्स करने के लिए दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, और ये एक बात है। लेकिन मैं जो जिस तरह से आर्ट को लेता हूँ, मुझे अलग अलग किरदार निभाना बहुत अच्छा लगता है, और वो सीरियस हो या कॉमेडी हो। कॉमेडी में सिर्फ उसका कैरिकेचर बना देता हूँ और सीरियस में जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो। और मैं लकी हूँ कि मुझे इस तरह की भूमिकाएं करने को मिल रही हैं। थैंक्स टू विकास सर ऑल्सो इन सारी फहरिस्त में, जिन्होंने सनफ्लावर में बड़ा खूबसूरत किरदार दिया निभाने को, और अब ये भी बड़ा मज़ेदार एक प्यारा सा कैरेक्टर है जिसे मैंने बड़ा एंजॉय किया। और अलग अलग किरदार निभाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैं बस ईश्वर से यही दुआ करता रहता हूँ हमेशा कि मुझे और कुछ आता नहीं है, थोड़ा बहुत यही आता है, और यही मैं करता रहूँ और अलग अलग भूमिकाएं निभाता रहूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू। Thank you so much, ladies and gentlemen. Sunil is, I think, one of the finest actors we have in the country. Wow. And मैं हर फिल्म सुनील के पास लेके जाता हूँ, हर फिल्म, हर शो, जो भी मैं बनाता हूँ मैं सुनील के पास लेके जाता हूँ। फिर भाई साहब डिसाइड करते हैं कि वो उसका हिस्सा बनेंगे कि नहीं। मैं बोलता सर ये वाला रोल कर लो, अच्छा नहीं तो ये वाला कर लो, अच्छा चलो मम्मी का ही कर लो, तो पर रोल कर लो आप। और मैं भी एक और बात ऐड करना चाहूँगी। मैंने इनके साथ करोड़ों साल पहले फिलिप्स टॉप 10 किया था, है ना? क्या किया था वो कॉमेडी? जिगर पर बड़ी आग है। हाँ, लेकिन ये जो कह रहे हैं इसके अलावा एक्टर अच्छा है, कॉमेडी अच्छी करता है, ये बहुत गुड लुकिंग भी है और इतना हैंडसम है, और लोग इनको ऐसे नज़र से देखते नहीं है। मैं तो नहीं देख सकती, यंग लड़कियों को देखना चाहिए। नजर की बात है। अभी यहाँ पे बहुत अच्छी नजर दिखाई आपने इस ट्रेलर को। आगे बढ़ते हैं, एंड बिफोर वी रैप अप वी हैव अभिषेक विद अस। अभिषेक, व्हाट वुड यू लाइक टू से? यू नो, यस, पूरी टीम, यस ऑफ कोर्स यू आर अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग टीम। बिफोर वी रैप अप, यू नो, योर एक्सपीरियंस विद दिस अमेजिंग कास्ट, मैं तो मतलब क्या ही कहूँ इसके बारे में। I'm very blessed, I feel. I'm very thankful to Vikas sir. I started back in 2011. Yes. We are in 2022 now. And it's my first film. I have Sunil sir, Rashmika, Vikas sir, Bahl bhai, Ektaa ma'am. I got to work with Amitabh sir. I think so people would know it's a very big thing from where I come from. Years back, I was a host here, and I was doing a trailer launch for a film. And I'm back here again, sitting for my own trailer launch. So that's a very big thing for me. Thank you so much. यानी उम्मीद मैं भी देख सकता हूँ थोड़ी कुछ. All right, this one's for you, Sahil. Please tell us, for you, how's it been? It's been amazing. Pavel and I came to Bombay in 2006 together, and you know, today we're together doing a film. I wanted to act 16 years back. I still wanted to act. I always want to act. I'm here. It's the happiest moment ever. Thank you. Amazing. Ladies and gentlemen, a big round of applause for this amazing, amazing team of Goodbye. And yes, before we wrap up, would like to invite on stage Mr. Viraj Sawant, who's the co-producer from Good Co. Give it up for Sawant Saab. Sir, कुछ खतरनाक fan following है ये तो. ये क्या हो गया? Oh.